ओके, एक बच्चे ने लिखा है कि सर क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आ जाओ। वेरी गुड, हम लोग लेके आएंगे, डोंट वरी। जो रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह है वो हम सब करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग आज की क्लास का देख लेते हैं। डेफिनेटली बहुत जल्दी लेके आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तुम लोगों के जो भी रिक्वेस्ट है वो सारे रिक्वेस्ट माने जाएंगे। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है देखो, हम लोग अगर मान लें कि एक्स डिफ्रैक्शन के लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला है फॉर एक्स डिफ्रैक्शन, जो डिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूजुअली होता है दैट इज 2d sin theta is equals to n lambda. I can say this. Now 2d sin theta equals to n lambda. यहां से अगर sin थीटा के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा n lambda डिवाइडेड बाय 2d। अगर हमें बोला जा रहा है कि क्यूबिक क्राइस्टल है तो d is the thick separation between the planes. So for any plane I can say for a cubic crystal d is equals to a divided by root over of h square plus k square plus l square. We know this. तो अगर वही चीज मैं यहाँ पे प्लेस करूं तो ये आ जाएगा n lambda डिवाइडेड बाय 2 into a रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई थिंक ये वाला चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे थीटा क्या है भाई, थीटा है हमारा ब्रैग एंगल, और अगर पूछा जाए व्हाट्स योर टू थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। भाई टू थीटा क्या है, टू थीटा है हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाए जहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच फर्स्ट ऑर्डर पीक इन एक्स रे, द वैल्यू ऑफ थीटा at which the first order peak in X-ray, the first order peak in X-ray, wavelength यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, lambda is equals to 1.53 angstrom, 1.53 angstrom, diffraction corresponding to 111 plane of diffraction corresponding to 111 plane of a simple cubic structure with lattice constant, a simple cubic structure with lattice constant, a equals to 2.65 angstrom, a equal to 2.65 angstrom is, option A says 15, B says 30, C says 60, and D says 45 degree. How will you solve this question? देखो बोला गया है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन हो रहा है, वेवलेंथ हमें बता दिया गया है, कौन सा प्लेन है वो हमें बता दिया गया है, और ये बोला गया है कि लैटिस कांस्टेंट है ए। तो हमें सिर्फ एंगल निकालना है बेसिकली, तो डिफ्रैक्शन एंगल हमें निकालना है। तो बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान दें, हमें पता है कि 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, जहां पे n इज एन इंटीजर। Therefore, sin theta, जहां पे theta is my Bragg angle, can be written as 2 lambda n lambda by 2d, that is n lambda by twice of a into root over of h square plus k square plus l square. तुम्हें यहाँ पे कौन सा प्लेन बोल दिया गया है भाई, प्लेन 111। प्लेन 111 is mentioned, lambda is 1.53, a is 2.65. तो अगर हम लोग मान ले कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन for first order diffraction n हमारा 1 हो जाएगा,
So sin theta will be equals to 1 into lambda is 1.53, 1.53 whole divided by 2 multiplied by a equals to 2.65, 2.65 into हम लोग बोल सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ रहा है भाई 1 into 1.53 divided by 2 into 2.65 यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 3 आया है तो इससे कैलकुलेशन करके देखना हाफ आता है साइन थीटा का वैल्यू अगर हाफ है दैट इंप्लाइज थीटा जो है वो 30 डिग्री हो अब यहाँ पे मुझे क्या निकालने के लिए बोला गया था यहाँ पे पूछा था द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द फर्स्ट ऑर्डर पीक ऑब्जर्व्स तो ये जो थीटा पूछा गया है दैट इज माय ब्रैग एंगल एक्चुअली सो ब्रैग एंगल इज 30 डिग्री सो ऑप्शन बी इज करेक्ट अगर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछता तो बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों को एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन वुड बी ट्वाइस ऑफ थीटा ठीक है जो 60 डिग्री होता है बट इन लोगों ने ब्रैग एंगल थीटा पूछा है तो मैंने आंसर यहाँ पे बता दिया सेम काइंड ऑफ और एक प्रॉब्लम है जहां पे बोला गया है कि जहां पे मेंशन किया गया है दैट लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट जहां पे ये क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया गया है दैट मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आर इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज of wavelength 1 angstrom are incident on a simple cubic crystal are incident on a simple cubic crystal the first order Bragg reflection from 311 plane the first order Bragg reflection from 311 plane the first order Bragg reflection from 311 plane occurs at an angle of 30 degree from the plane occurs at an angle of 30 degree from the plane पूछा गया है the lattice parameter of the crystal in angstrom the lattice parameter of the crystal in angstrom क्या होगा 1 root 3 root over 11 by 2 root over 11 1 root 3 root over of 11 by 2 root over of 11 इसका सॉल्यूशन करते हैं आ जाओ देखो हमें पता है कि sin theta is equals to n lambda by 2a root over of h square plus k square plus l square यहाँ पे उन लोगों ने हमसे लैटिक पैरामीटर पूछा है लैटिक पैरामीटर या लैटिक कांस्टेंट इज माय a so a equals to n lambda by 2 sin theta into root over of h square plus k square plus l square होगा now for first order diffraction we know that n equals to 1 अगर n equals to 1 है और यहाँ पे एंगल के बारे में बोल दिया गया है एंगल इक्वल्स टू व्हाट इज द एंगल इज 30 डिग्री वेरी गुड द प्लेन ऑकर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री सो अगर एंगल 30 डिग्री है सो आई कैन टेक इट एज लैम्डा बोला गया है कुछ एनीथिंग अबाउट द लैम्डा ओके वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम वेरी गुड 1 एंगस्ट्रॉम हैज बीन मेंशन्ड सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू this is going to be 1 into 1
divided by 2 into sine 30 into root over of the plane has been mentioned as 311, so 3 square plus 1 square plus 1 square. साइन 30 का वैल्यू क्या आता है भाई? साइन 30 इज इक्वल्स टू हाफ, तो हाफ ऑफ कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1 plus 1 is 1, 3 square is 9, so ये तुम्हारा आ जाएगा root over of 11. So of course which option will be correct? This option will be correct. Which option will be correct? This one is correct. ओके इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं एंड द प्रॉब्लम सेज in that question it's mentioned very clearly that a narrow beam of X-rays with wavelength 1.5 angstrom, narrow beam of X-rays with wavelength 1.5 angstrom is reflected from an ionic crystal with an is reflected from an ionic crystal with an FCC lattice structure with an FCC lattice structure with a density of 3.32 with a density of 3.32 gram per centimeter cube. Gram per centimeter cube. The molecular weight is the molecular weight is 108 AMU. 108 AMU. अब यहाँ पे बता देना चाहिए कि बेसिकली one AMU equals to 1.6 to the minus 24. 10 to the power of minus 24 ग्राम आता है। अब जरा यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर ए हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है द लैटिस कांस्टेंट इज the lactic constant is we can talk about the lactic constant. Option says 6 angstrom, 4.56 angstrom, 6 angstrom, 4.56 angstrom. Option C 4 angstrom, and lastly 2.56. 2.56 angstrom. And then second question, the sine of the angle corresponding to 111 reflection. And then question B mentions the sine of the angle corresponding to 111 reflection
is, the option says root 3 by 4, option B says root 3 by 8, option C says 1 by 4, option D says 1 by 8. देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी घबराना मत। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बेसिकली हम लोग को पता है कि a cube is equals to molecular weight into effective number of molecules per or effective number of atoms per unit cell divided by density into Avogadro number. Now we know that what's the value of capital N? Capital M has been mentioned to be equals to 108 AMU. 108 AMU मतलब 108 into 1.6 into 1 is 24. तो हम लोग लिख सकते हैं 108 into 1.66 into 10 to the power of minus 24 multiplied by ये जो लैटिक इन लोगों ने मेंशन किया था दैट लैटिक इज एन एफसीसी लैटिक। अगर एफसीसी लैटिक है तो 4 इज द effective number of atoms per unit cell. उसके बाद density they have mentioned in look I have taken this mass in gram, तो density उन लोगों ने सीरीज में दिया था 3.32 gram per centimeter cube. Very good. Then multiplied by 6.023 into 10 to the power of 20. यहाँ से देख लेना ये क्या आ रहा है, ठीक है? यहाँ से जब a का वैल्यू आ जाएगा, आई थिंक तुम sin थीटा निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। sin थीटा इज इक्वल्स टू n lambda by 2a रूट ओवर ऑफ कौन सा प्लेन बोला था इन लोगों ने? प्लेन इन लोगों ने बताया था the plane that they have mentioned here is okay the sine of the angle. फिर यहाँ पे कौन सा प्लेन बोला था? 1 1 1 प्लेन, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे जो n है n को हम लोग 1 मान लेते हैं, तो लैम्डा बाई 2 है और यहाँ पे रूट 3, तो लैम्डा रूट 3 बाई 2a। तो यहाँ से तुम लोग लैम्डा तुम लोगों को पता है 2a, तो यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से रूट 3, यहाँ से तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ये नेट का क्वेश्चन है, ये नेट 2011 का क्वेश्चन है, 2011 में आया था नेट का, नेट 2011 में आया था ये क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं, this question seems very important. TIFR 2020 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? A beam of X-rays is incident upon a powder sample. Beam of X-rays is incident upon a powder sample of a material which forms simple cubic crystal of lattice constant 5.5 angstrom, of lattice constant 5.5 angstrom. Okay, the maximum wavelength of the X-rays which can produce the maximum wavelength of the X-rays which can produce diffraction from the planes with Miller indices
diffraction from the plane with Miller indices zero zero five, Miller indices 005 क्या होगा 2.2 angstrom, 55 angstrom. C says 1.1 angstrom. He says 27.5 angstrom. कैसे करेंगे? Beam of X is incident upon a powder sample of a material which forms a simple cubic crystal. Very good. Lattice constant is 5.5. मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा ये पूछा गया है, देखो तो जरा। हमें पता है कि 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा डिवाइडेड बाय n। अगर हम लोग बात करें रिगार्डिंग द, अब यहाँ पे d का वैल्यू हमें पता है, d इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय, तो 2a sin थीटा divided by n into root over of h square plus k square plus l square। यहाँ पे प्लेन मेंशन कर दिया गया, तो ये तो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हमें पता है 1 होता है, और हम लोग n को 1 मान रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन आई कैन टेक n इक्वल्स टू 1। अगर n 1 है तो यहाँ से मेरा लैम्डा मैक्स कब आएगा? 2a 1 into root over of प्लेन बोला गया है, प्लेन बोला गया है 005। अगर 005 प्लेन के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 1 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये रूट ओवर ये 5 आ रहा है, तो 2a डिवाइडेड बाई 5 इज द आंसर, 2 into a डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू बोला गया है that is a equals to what 5.5 angstrom, तो 2 into 5.5 divided by 5, ये 1.1, so actually 2.2 angstrom आता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा जो तुम यूज कर सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए, that is 2.2 angstrom, that's it। इसी टाइप से क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पे है। इसके अलावा तो इसके बाद ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर वगैरह आ रहा है, बट वो चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो चीज तुम लोग को मैं रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ा दूं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर वगैरह जो भी चीजें यहाँ पे है वो रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ाने के बाद बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ, ये क्वेश्चन गेट में आया था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है a crystal belongs to a FCC lattice with 4 atoms in the unit cell। Crystal belongs to the FCC lattice, belongs to the FCC lattice with 4 atoms per unit cell, with 4 atoms per unit cell. That thing we know. After that, they say the size of the crystal is 1 centimeter and it's the size
of the unit cell is 1 centimeter, and its unit cell dimension is, and its unit cell dimension its unit cell dimension is 1 nanometer. 1 nanometer. Now F is the scattering factor of the atom. Okay. पूछा गया है what is the number of atoms in the crystal is the number of atoms in the crystal is, crystal के अंदर कितने atoms है ये पूछा गया, in the order of, I can say 2 into 10 to the power of 21, B में पूछा गया है 4 into 10 to the power of 21, then C में पूछा गया है 2 into 10 to the power of 23, and D में पूछा गया है 4 into 10 to the power of 24. कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन? देखो पहली बात तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं क्राइस्टल में। हमें पता है कि एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। कितना यूनिट सेल उस क्राइस्टल में है अगर ये पता चल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, तो कितना यूनिट सेल उस क्राइस्टल में है कैसे पता चलेगा? एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है, पूरे क्राइस्टल का वॉल्यूम अगर पता हो तो उस वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, क्या बोला गया है भाई? क्रिस्टल का वॉल्यूम बोला गया। ओके, द यूनिट सेल इज ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इट्स यूनिट सेल डायमेंशन इज 1 नैनोमीटर। द साइज ऑफ द सेल, okay, hang on, the size of the crystal is 1 centimeter of the, this will be crystal, this will be crystal. The size of the crystal is 1 centimeter and unit cell dimension 1 nanometer. The volume of the crystal is 1 into 10 to the power of minus 2 whole cube. Volume of the unit cell is equals to 1 nanometer, so 1 into 10 to the power of minus 9 whole cube. Therefore, number of unit cell in the solid is equals to what? Volume of the crystal by volume of the unit cell, that is 1 into 10 to the power of minus 2 whole cube, whole divided by 1 into 10 to the power of minus 9 whole cube. This is 10 to the power of minus 6, this is 10 to the power of minus 27. So if it goes up, it's 10 to the power of 27 minus 10 to the power of 6. So 10 to the power of 21, I can see. Therefore, this is the number of unit cell. Now, one unit cell has 4 atoms because the crystal is FCC. Therefore, total number of atoms would be equals to 4 into 10 to the power of 20. I think you can see this from here. Option B is correct. 4 into 10 to the power of 21, option B is correct. Okay. So, fine, I'm gonna take the class for today up to this. If there is any doubts, any questions, you can surely ask me.
अदरवाइज आई विल एंड द क्लास। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तुम लोग बता सकते हो। ओके, संजीव हैज asked some questions. Okay, fine. चलो ठीक है, एक्चुअली कहाँ से भी कहाँ पे ही आ जाए, लेकिन जो कंटेंट डिलीवरी है दैट इज कांस्टेंट, लाइक वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग यू पीपल, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कुछ बच्चों ने बोला है कि सर क्वांटम मैकेनिक्स की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मोस्ट रिपीटेड और प्रॉबल क्वेश्चंस है वो लेके आ जाओ। डेफिनेटली हम उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे और उसके बारे में भी हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं। मतलब एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर रेसिप्रोकल लैटिस वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ा दीजिए। फिर वो ब्रिलुआ फंक्शन क्या होता है, ब्रिलुआ जोन क्या होता है, फिर ये सब जो चीजें हैं, मतलब उसके बाद फिर हाउ टू ड्रॉ द विजन सेट सेल एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स बच्चों बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ा दो। तो मैं इसीलिए ये कोर्स लेके आया था। मैक्स टू मैक्स इट विल गो फॉर 3 और 4 days मोर, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो तब तक इसको देख लो, उसके बाद रेसिप्रोकल लैटिस जैसे ही हो जाता है हम लोग चले जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है वो हम कवर करेंगे। ठीक है? So I hope you all are there. So and you are taking your preparations for the December exam at the highest level. So just do the preparation. That's all I can say. All the best. ठीक है then. Signing off.